हाय दिस इज़ डेमो अबाउट S3 पार्ट 1। इसके अंदर हम S3 सर्विस में जाके बकेट क्रिएट करेंगे, उसमें फिर ऑब्जेक्ट ये कोई फाइल लोड करेंगे और तीसरा उसमें वर्जनिंग अनेबल्स फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि वर्जन करने अनेबलिंग के बाद जब हम सेम फाइल दोबारा लोड करते हैं तो कैसे वर्जनिंग इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तीसरा जो है वो इसको पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और फिर जो भी बकेट का HTTP लिंक होगा उसको यूज़ करके हम ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट विद इन अ बकेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसकी AWS की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वी विल फाइंड दिस लाइक वी कैन डू सर्च और you can also have recently visited the link available to you। तो आप यहाँ पे जाके इसको S3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये S3 का जो है UI जो इंटरफेस है वो इसको ओपन करेगा। यहाँ पे हम बकेट्स को क्रिएट करेंगे आके और लेट्स गो टू द मेन लिंक और यहाँ पे हम I already have one buckets created। let's start from the scratch, create the bucket। so मैं इस bucket को नेम देता हूँ base bucket Canada और उसके बाद region is already given to me but I have a choice। मैं कोई और भी region को चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद है अगर मैंने ऑलरेडी जैसे कि मैंने बकेट्स क्रिएट की हुई थी पहले, अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी कन्फिग्रेशन मैंने एग्जिस्टिंग बकेट्स की यूज़ करना चाहता हूँ तो देन आई कैन चूज़ द बकेट। सो व्हेन आई गो देयर इट गिविंग मी ऑप्शन द बकेट आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड बिफोर। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। आगे है कि इस बकेट को बाय डिफ़ॉल्ट there is you cannot access this bucket from the browser। इसका मतलब है कि पब्लिक को ये बकेट जो है ना अवेलेबल नहीं है। nobody can access to this one, is going to be on the private network at this moment। so bucket versioning इसको मैं enable करता हूँ। so you will see how this version going to work। I'm not going to encrypt the data। so advanced setting में object log, you can log the object और इसमें ये है कि let's see कि आप किसी को read and write की जो permissions हैं वो आप enable कर सकते हैं। but you can log, you can say okay I'm going to write this only once, but the people who are going to access this bucket they can read as many times। so create bucket। so this bucket can has been created। so see this saying the public को access नहीं है इसके ऊपर, is only available for the private on the private network। इसका मतलब है कि only in the AWS environments। so let's go to the bucket और इस bucket के अंदर आगे you can see the properties। so in properties you have all this information about the bucket because we are at the bucket level। so there is a versioning is enabled on the bucket level। then we have if you want to log about the access कि कौन इसको रीच कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, तो you can have a log of on those kind of information। अगर वेब होस्टिंग करनी है स्टैटिक वेबसाइट वी ऑलरेडी डिस्कस, तो वेब होस्टिंग भी इस पे हो सकती है S3 के अंदर। ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग एक लॉगिंग है जो आप कर सकते हो बकेट लेवल पे, और एक यू कैन हैव एक्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट लेवल, तो कौन किस ऑब्जेक्ट को किसने कब एक्सेस किया। सो दिस डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन इज़ नॉट enabled, I'm not using that। object log I already discussed। tag means you can have more information in addition to the bucket name। transfer acceleration is one of the functions
जो कि आपकी डेटा ट्रांसफ़र है. If you want to download something from the bucket, it can going to accelerate. There is a mechanism behind that. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. So in event notification you can use SNS services, ताकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फाइल अपलोड की जाती है इसके S3 के अंदर, तो you can be informed about that. सो रिक्वेस्ट पेयर्स, इसके अगर आप अपनी कोई कंटेंट ऐसे हैं जो कि पब्लिक जब उसको एक्सेस करेगी दे गोइंग टू पे यू, सो यू कैन यूज द रिक्वेस्टेड पेज एज वेल. So let's go to the permission. So the permission is see the block all public access, and there's other way to control the access is called access control list. We will discuss this in a VPC lecture. So let's go back to right now, because this is not available to public, so I don't have any public any policy attached to this bucket. So cross region configuration is a new ये इसमें ये है कि let's see कि आप अगर within Amazon environment अगर आपका एक वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर से आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है आपकी S3 को, they trying to access to the S3 from within Amazon VPCs, so you can actually provide the access. They can come from a different origin. For example, एक database जो है वो access करने की कोशिश कर रहा है S3 को, दूसरी तरफ SNS service they are trying to access to S3. So these are two different origin, and these two origins are accessing the S3 bucket, so you can do the cross region accessibility. So let's go back to the overview. Now I'm going to upload the file. Before I upload the file, let me show you the file. Which file is going to be, let's see, the file is here. In this file I have lecture, I have lab, so this is the file. So in this file I say, just say S3 file, you can say like the first file. So I'm going to save it. So add file, so I'm going to select this one, next. So now you have option कि आप इस फाइल के ऊपर किस किस्म की एक्सेस प्रोवाइड करना है. You want the person who going to access have read only access or read and write. So this kind of permission you can allow the person who going to access this file. So next. So here okay, कौन सी स्टोरेज क्लास में आपको ये बकेट क्रिएट करनी है, तो I'm selecting standard. There are other classes as well, intelligent tiering and standard IA, one zone IA and glacier also we have discussed in the class. So once we have this, upload. So now I have this file here in my bucket, this bucket Canada. So let's open it, or I can open the file. So see, this is my S3 first file. So what I'm going to do, I'm going to upload the same file without changing its name. So let's go here. I'm only changing the content. So I'm saying here, this is second file. I'm going to save it, but I'm not going to change the name of the file. See, the file S3, still the name of the file is S3. So I'm going to upload it now. So at this level, let's see, I have only one version, which is called latest version. So because we have enabled version, so this is on, that's why I'm getting only this one line saying latest version. So let's see, I'm going to upload the file again. Upload, add file, same file, upload, and I'm going to, so see, nothing is not going to add any new line here, this because this is the same file, same name, so it's gonna be giving me, instead of adding then
new object here, it's giving me something like this. It's giving me a second version of the file. See, now I have another version of the file, which is the latest version. So if I try to open the file from here, it will show only the latest version. So I said this is my second file. See, the name is the same, but I changed the content, so that's why it's showing me this is a second file. So this is how the versioning part work. So in the next demo, we are going to do this cross-region replication, and also I'm going to do the public access to. So now I'm going to give the public access to this bucket. So let's see, this is our bucket. I'm selecting this bucket, going to the permission, and here I'm going to edit the access. So right now I have it's not available to public. So when this is not available to public, so for example, if I go back and see, I have a link here, which is HTTP link. After I use this link in a browser, so यहाँ पे ये है कि अभी ये URL हमें मिला है ऑब्जेक्ट के लिए, तो HTTPS। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं अपने ब्राउज़र में डालता हूँ, तो दिस इज काइंड ऑफ मैसेज आई विल गेट. The reason is this because this bucket has no public access. So I'm trying to reach this object through the HTTPS, through the public domain. So let's go back and I'm going on the permission on the bucket level, permission. So now I'm going to edit the permission. Here I'm going to uncheck it, or after that I have to save it. So I'm going to confirm. Now public access setting updated, right? So I'm going back to the overview. So let's see this time if this is available through the browser. So I'm going to use this.